गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कुरील आइलैंड्स। तो जापान जो है उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में ये रिलीज़ किया है कि जो कुरील आइलैंड्स है वो रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किए हैं। ठीक है, तो पहले तो मैप में देखते हैं कुरील आइलैंड है कहाँ। तो ये आपका रशिया है, ये आपका जापान है। तो जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये सदर्न कुरील आइलैंड्स है। जो ऊपर के आइलैंड्स हैं ये ऑलरेडी ही रशिया के पास हैं। लेकिन जापान क्या कहता है कि जो यहाँ तक के आइलैंड्स हैं, ये वाला पार्ट जो है जो दो लाइंस के बीच में, ये जापान का है। लेकिन रशिया जो इसको डिनाई करता है, रशिया कहता है नहीं, ये एंड तक जो है ये जो है हमारे ही आइलैंड्स हैं। कुरील आइलैंड्स हमारे ही जो है सोवरेनिटी के अंडर आते हैं। तो ये एक जो है इन आइलैंड्स का डिस्प्यूट है रशिया और जापान के बीच में। तो जापान क्या कह रहा है अब कि ये जो आइलैंड्स है ये रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो है दोनों जो हैं कंट्रीज़ कुछ आर्गुमेंट्स रखती हैं। तो जैसे कि जो है आपके साल 2003 के बाद जापान ने क्या कोशिश करी कि वो रशिया के साथ थोड़े से मतलब जो ये डिस्प्यूट्स हैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले और बाकी चीज़ों पर फोकस करे। तो उन्होंने अपनी थोड़ी लैंग्वेज सॉफ्ट कर ली थी इसके ऊपर। लेकिन अब यूक्रेन में एग्रेशन को देखते हुए जो है जापान जो है वो दोबारा से इसके ऊपर जो है वो वॉसिफरसली क्लेम करना शुरू कर दिया है जापान ने कि वो उनकी ही टेरिटरी है। तो अब जो है चार आइलैंड्स हैं, ये सी ऑफ ओखोस और पैसिफिक ओशन के बीच में पड़ते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो उस पर सोवरेनिटी क्लेम करती हैं। और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर क्या हुआ था कि जब 1949 का टाइम आया तो सोवियत यूनियन ने आइलैंड्स को जो है सीज़ कर लिया था और जो जापानीज़ रेजिडेंट्स वहाँ पर रह रहे थे उनको एक्सपेल कर दिया था। ठीक है, तो टोक्यो जो है जापान जो कहता है कि सिंस अर्ली 19th सेंचुरी जो है ये आइलैंड्स जो हैं जापान के ही थे, जिसको बाद में फोर्सिबली जो है सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो अब जो है इसमें दोनों कंट्रीज़ कुछ ट्रीटीज़ की आर्गुमेंट दे दी। जापान जो है वो दिखाते हैं कि हमारे पास पहले ऐसी ट्रीटीज़ पड़ी हैं जिसकी वजह से जो है आप ये जो है क्लेम कर सकते हैं कि इन आइलैंड्स पे हमारा जो है सॉवरेनिटी है। सिमिलरली रशिया दिखाता है 1945 से के बाद की जो ट्रीटीज़ हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है वो अब रशिया की या सोवियत यूनियन की जो है वो हो चुकी है। सो ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, आप कह सकते हो आइलैंड का डिस्प्यूट है जो कि अब बढ़ता जा रहा है। और ये अब यूक्रेन के बाद ये एक और सिचुएशन जो है वो वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स। तो तमिलनाडु असेंबली ने दो बिल्स पास किए हैं अभी रिसेंटली कि उन्होंने क्या किया है कि जो गवर्नर की पावर होती है वाइस चांसलर्स अपॉइंट करने की, वो छीनकर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी है। तो अब ऐसा कहना है तमिलनाडु गवर्नमेंट का कि जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो ओपिनियन को डिसरिगार्ड कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी, इसीलिए उनको ये फैसला लेना पड़ा। तो ये सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, ऐसे पहले महाराष्ट्र असेंबली, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इन सब ने भी जो ऐसा फैसला लिया था और कहा था कि जो एक गवर्नर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहेस्ट पर जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो है एडवाइस को टेंडर नहीं करते हैं और जो है गवर्नर के अपॉइंटमेंट में जो है वो आर्बिट्रेरीनेस दिखाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं क्या इससे रिलेटेड। तो एक्चुअली जो है एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो मतलब स्टेट और सेंटर दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, जो आपका जो वाइस चांसलर्स क्योंकि ऑफकोर्स हायर एजुकेशन से डील करेंगे, तो वो जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है। इसी के लिए ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है इसमें, इनके अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेटेंट्स इन इंडिया। तो अभी इंडियन पेटेंट्स रिपोर्ट जो है वो नास्कॉम ने रिलीज़ किया, उसमें दिखाया है कि लगभग 1,38,000 टेक पेटेंट्स इंडिया में जो है वो रजिस्टर हुए हैं 2015 से 2021 के बीच में। तो पेटेंट क्या होते हैं? पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ऑफकोर्स, एक एक्सक्लूसिव मोनोपोली देता है पेटेंट होल्डर को, गवर्नमेंट देती है ऑफकोर्स एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए उनको मिलता है, समझ लो 10 साल 15 साल का जो है उनको मोनोपोली दे देते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को इनोवेट किया है। तो ये एनफोर्सेबल लीगल राइट है ऑफ कोर्स। और दो तरह के पेटेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट अगर पेटेंट हो गया तो आप उस फाइनल प्रोडक्ट को ही प्रोटेक्ट कर लिया है, तो आप किसी भी तरीके से उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते क्योंकि उसकी मोनोपोली जो है वो एक पर्टिकुलर पेटेंट होल्डर के पास है। प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है कि आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को बनाने का, आप किसी और तरीके से उस प्रोडक्ट को बना सकते हो लेकिन आप उस प्रोसेस को जो है वो आप नहीं जो है वो फॉलो कर सकते। ठीक है, तो एक्चुअली इंडिया पहले प्रोसेस पेटेंट जो है उसको फॉलो करता था, लेकिन बाद में ऑफ कोर्स जब पेटेंट्स एक्ट 1970 था तो उस टाइम पर इंडिया प्रोसेस जो है पेटेंट को फॉलो करता था। लेकिन उसके बाद जब WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट आया तो इंडिया को प्रोडक्ट पेटेंट पे जो है वो मूव होना पड़ा क्योंकि सारी कंट्रीज़ जो है प्रोडक्ट पेटेंट पर मूव हो गई थी। ठीक है, तो पेटेंट्स एक्ट 1970 ऑफ कोर्स जो है
यंगर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर लाया गया था। पेरिस कन्वेंशन और जो है बुडापेस्ट ट्रीटी को इसने अकोमोडेट किया। पेरिस कन्वेंशन आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बुडापेस्ट ट्रीटी जो है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसको एक्ट को 2005 में अमेंडमेंट की गई, क्योंकि जब WTO ट्रिप्स आ चुका था तो हमें इंडिया को प्रोडक्ट पेटेंट पर मूव होना पड़ा, ठीक है। सो अब जो है हमने प्रोडक्ट पेटेंट को जो है लगभग सारी ही फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब पे ही हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब रिसेंटली आपको याद होगा कि 2021 में भी कुछ जो है वो चेंजेस किए गए थे इन पेटेंट रूल्स में। तो जैसे कि उसमें कहा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अब कहा गया कि पेटेंट्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही आने चाहिए। फिर 80% रिबेट दी गई उनको पेटेंट फाइलिंग फीस में, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर ये भी कहा गया कि एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाए। तो अब इसमें क्या होता है कि 41 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये बहुत ही फास्ट ग्रांट किया गया है पेटेंट। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो 8 मोर कैटेगरीज जो हैं उनमें ये जो है फास्ट जो है पेटेंट ग्रांट किया करेंगे। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया 8 मोर कैटेगरीज को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन। तो एक सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन जो है उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। US बेस्ड वैक्सीन है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने जो है इसके ऊपर ट्रायल्स कर रही हैं। ARCT-154 ये नाम है वैक्सीन कैंडिडेट का, ठीक है। तो भी डिफरेंस कैसे होती हैं सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन नॉर्मल mRNA वैक्सीन से कैसे डिफरेंट होती है? आपकी जो नॉर्मल mRNA वैक्सीन होती हैं वो स्पाइक प्रोटीन को जो है वो एनकोड करती हैं, ठीक है। मतलब बॉडी में आपके स्पाइक प्रोटीन एक बार बता देती हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है, आपके के साथ इंट्रोड्यूस कर देती हैं स्पाइक प्रोटीन के साथ। फिर होता क्या है कि कल को जब कोरोना वायरस या कोई वायरस आपकी बॉडी में आता है, जो उसके जब फिर हमारी बॉडी वो स्पाइक प्रोटीन को देख लेती है तो उसको अटैक कर देती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है mRNA वैक्सीन जो है, जो आपकी फाइजर बायोटेक वैक्सीन या फिर आपकी मॉडर्ना वैक्सीन की क्या लिमिटेशन है कि अगर स्पाइक प्रोटीन में ही कोई जो है चेंज आ जाए या स्पाइक प्रोटीन में ही कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो आपकी बॉडी जो है वो नहीं पहचान पाएगी। तो इस केस में mRNA वैक्सीन फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि इवन US वगैरह में आप देख रहे होंगे कि इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होने के बावजूद भी वहाँ पर केसेस जो है वो थम नहीं रहे हैं। तो उसका यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो उसमें उस कंटेक्स्ट में कहाँ पर हेल्पफुल होती हैं आपके ये सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन? तो सिंपल सा एक ये फ़र्क है इसमें कि ये स्पाइक प्रोटीन के अलावा भी 4 और प्रोटीन जो है वो बॉडी को इंट्रोड्यूस कराती है, ताकि आपकी बॉडी जो है वैक्सीन जो आपके एंटीजन है वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएँ और बॉडी जो है वो वायरल जो है प्रोटीन्स को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए। इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक प्रोटीन, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना, बॉडी को 4 एक्स्ट्रा प्रोटीन्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। इसका बेनिफिट एक ये भी है कि इसकी स्मॉल डोज देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आपकी mRNA वैक्सीन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, ठीक है। तो ये आपको पता है, हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके अंदर कुछ अभी अमेंडमेंट्स की गई हैं वो देख लेते हैं। अब इसमें कहा है कि जितनी भी मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है डिफेंस सर्विसेज की और इंडियन कोस्ट गार्ड की, अब हम कोशिश ये करेंगे उसको सब कुछ हम इंडिजिनसली ही सोर्स करें, ठीक है, बाहर से हम इम्पोर्ट ना करें। अगर कोई इंपोर्ट करना भी है कैपिटल एक्विजिशन में तो वो एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन कैसे ही होगा, उसको रक्षा मंत्री या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो अप्रूवल चाहिए होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड पैक्ट गारंटी जो थी उसको ख़त्म करके अब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर दिया गया है एक्विजिशन केसेस में, ठीक है। सो अब जो है आईडेक्स आपको पता है ना कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपना या इवन पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी अपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और उसको जो है हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी डिफेंस फोर्सेस प्रोक्योर कर सकती हैं। तो इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है और कहा गया है कि हम चाहते हैं कि 22 हफ्ते के अंदर अंदर सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, इन केस हम आईडेक्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो फिर मेक 2 प्रोसीजर जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सिंगल स्टेज कॉम्पोजिट ट्रायल्स कर दिए गए हैं प्रोटोटाइप्स के लिए। नहीं तो पहले क्या होता था कि प्रोटोटाइप्स की बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होते थे, उसके बेसिस पर ही उनको अप्रूवल मिलता था। और क्वांटिटी वेटिंग और स्केलिंग, इसको भी जो है रिक्वायरमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया है। तो जिसको नहीं पता उनको थोड़ा बता देते हैं कि मेक 1 कैटेगरी और मेक 2 कैटेगरी क्या होता है। तो मेक 1 कैटेगरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको 90, अगर आपका प्रोडक्ट उनको प्रोटोटाइप आपका जो आपने बनाया, समझ लो टैंक का प्रोटोटाइप बना के आपने गवर्नमेंट को दिखाया, तो गवर्नमेंट आपको 90% उसकी जो है
फंडिंग दे देगी कि आप इस प्रोटोटाइप को बनाओ, हम चाहते हैं कि आप इस टैंक को डेवलप करो, ठीक है। मेक टू कैटेगरी में क्या होता है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं मिलती, ठीक है। प्रोटोटाइप आप खुद बनाना पड़ता है आपको, और जो है आपको अपनी जो है प्रोडक्ट को अगर आपको गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है तो आपको कोई उसके गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है। तो इतना बेसिक डिफरेंस यही है इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर पढ़ लेना, बट मेजर डिफरेंस यही है। तो सेलियंट फीचर्स क्या हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के? ऑफ कोर्स इसमें हम नो लिस्ट ऑफ वेपन्स निकालते हैं, जो कि हम जिस पे हमने इंपोर्ट का बैन लगाया है, ठीक है। आपको पता होगा कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट वेपन्स की लिस्ट निकालती है कि इनको अब हम आगे से इंपोर्ट नहीं करना चाहते। तो उससे क्या होता है कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री या इवन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को भी पता लग जाता है कि गवर्नमेंट इसको अब इंडिजिनसली प्रोक्योर करना चाहती है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इसको हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर इंडिजनाइज, इवन जो इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी भी इंडिजनाइजेशन करने की बात की गई है इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर। और अलग अलग कैटेगरी, मेक 1 मेक 2 हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है बेसिक आपके जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर FDI लाना, फिर जो है ट्रायल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, और जो है ऑफसेट्स में क्या होता है आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी फॉरेन कंपनी से, हम समझ लो हमने जब रफ़ेल जो है वो प्रोक्योर किया, एग्जाम्पल लेते हैं 1000 करोड़ रुपए में हमने रफ़ेल को प्रोक्योर किया, तो हमारा तो 1000 करोड़ रुपए जो है वो रफ़ेल के पास जा रहा है। तो हम उनको कहते हैं कि हम आपसे तभी खरीदेंगे जब आप हमसे भी कम से कम इस अमाउंट का 20 से 30%, या चलो एग्जाम्पल लेते हैं 40% आप हमसे कुछ ना कुछ और सामान खरीदो, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हम चाहते हैं कि उनको भी तो कुछ ना कुछ खरीदना होगा ना हमसे, ठीक है। चाहे वो हमसे छोटी मोटी कोई बंदूक पिस्तौल खरीदें या कुछ भी और चीज़ जो है वो हमसे खरीदें, ताकि जो है ऑफसेट हो जाए, हमारे को ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान ना हो। हम तो उनसे 1000 करोड़ का ही खरीदेंगे सामान ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सचेंज में, और उनको कहा जाता है कि आप भी हमसे कुछ जो है वो इस अमाउंट का 30 से 40% जो है वो कुछ खरीदो, ठीक है। तो उसको जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स को हम जो है ऑफसेट्स, अगर हमको लगता है कि समझ लो कोई सिंगल पार्टी है, ठीक है, तो अब समझ लो कि सिर्फ रफ़ेल को एक ही कंपनी बनाती हो, जो हम प्लेन खरीदना चाहते हैं सिर्फ अगर एक ही कंपनी बनाती हो, तो उसको हम नहीं कह सकते, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते ऑफसेट्स के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि अगर सिंगल वेंडर होता है तो हमारी जो है प्रोक्योरमेंट रुक जाती है, क्योंकि वो राज़ी नहीं होता ऑफसेट्स के लिए। तो इसके लिए उन केसेस में जो है ऑफसेट्स को भी जो है गिव अवे कर दिया जाएगा, अगर इन केस गवर्नमेंट जो है डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपिसोडिकली एक्रेटिंग यंग स्टार्स। तो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो है उन्होंने जो है एक एपिसोडिकली एक्रेटिंग यंग स्टार को जो है वो डिटेक्ट किया है, जिसका नाम गाई 20 EAE है, ठीक है। तो अब इस जो है न्यू मेंबर है ये, ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली रेयर ग्रुप ऑफ यंग स्टार्स का, और ये एपिसोडिक एक्रेशन से गुजर रहा है इस टाइम पर। और ये पहली बात तो देखते हैं कि हम एपिसोडिकली एक्रेटिंग यंग स्टार्स होते क्या हैं। तो एक्चुअली ये यंग स्टार्स हैं जो अभी यंग स्टेज पर हैं, इनका अपना जो है अभी तक ये हाइड्रोजन फ्यूजन जो है इनके कोर में नहीं हुई है, अभी ये बनना ही शुरू हो रहे हैं। तो अभी तक ये सिर्फ ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन और ड्यूट्रियम फ्यूजन से ही जो है वो के ही स्टेज पर पहुँचे हैं। इसमें होता क्या है कि ये सराउंडेड बाय अ डिस्क होते हैं, डस्ट या फिर गैसेस की डिस्क इनके आसपास सराउंड कर रही होती है, उसी से ही ये एनर्जी ले रहे होते हैं अपने आप को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी ले रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं मास एक्रीशन, ठीक है। तो एक सर्कमस्टेलर डिस्क से ये मास एक्रीशन ले रहे होते हैं, और जब ये फीडिंग रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ एनहांस्ड मास एक्रीशन, ठीक है। तो अभी तक हम 25 ऐसे रेयर ग्रुप ऑफ स्टार्स को डिस्कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आई क्रिएट। तो एक MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के आई क्रिएट और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बीच में। अब इससे होगा क्या कि आपस में कोलैबोरेट करेंगे, ताकि जो है प्रॉमिसिंग टेक स्टार्टअप्स को जो है वो हेल्प किया जा सके, उनको जो है इनोवेटिव जो है सोल्यूशंस जो है वो इनोवेटिव कैटेगरी जो है के सोल्यूशंस जो है वो उनको दिए जा सके, ताकि वो उसको मार्केटेबल बना सके उन सोल्यूशंस को, खासकर जो हाई टेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो आई क्रिएट है क्या? एक ऑटोनॉमस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, इंडिया का इस तरह का एक लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि टेक इनोवेशन जो बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करता है ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने में अपना, ठीक है। अहमदाबाद बेस्ड है ये, ऑफ कोर्स 412 इनोवेशंस और 30+ पेटेंट्स जो है वो सपोर्ट कर चुका है आई क्रिएट, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So
So the first topic is Kuril Islands. So recently, Japan's diplomatic blue book for 2022 has described these Kuril Islands as under illegal occupation of Russia. So what is this dispute? Actually, these are a group of 4 islands. So they are situated here. These are the islands, and Japan claims that these are part of Japanese territory, but Russia says that they are part of their territory. Okay, so that is the dispute. We call it we call it South Kuril or even Kuril Islands. So this is what is the dispute between Russia and Japan. So now the Japanese government has actually in 2003 they softened their tone. Japanese government softened their tone because they wanted to establish good relations with Russia, and they did not want these islands to remain the focus of their relations with Russia. But after the Ukrainian invasion, Japanese government is realizing that this could also become a flare point between these two countries. That's why they have started to make aggressive claims against these group of islands again. Okay, so this is the problem with these two countries, and they also they both of them have are claiming sovereignty over these group of islands. Actually, so these were part of Japanese territory in a 19th century, but after the Second World War, these group of islands were occupied by Soviet Union, and since then it has been in occupation of Russia. And now Japanese government is saying that since 1949 you are occupying this, but now we want these islands back because they belong to us. Okay, so that is what this dispute is about, and both countries present their cases. They present these treaties to claim their sovereignty over these groups of islands, but Russia is saying that since 1945 Yalta Agreement and later on other agreements, we have the sovereignty over these islands, and we do not recognize your sovereignty after that. Okay, so the next topic is appointment of vice chancellors. So Tamil Nadu Assembly has recently passed 2 bills which will transfer the governor's power in appointing vice chancellors to the state government. So why this issue has erupted? Because the government of Tamil Nadu is saying that governor was disregarding the state government's advice on the appointment of vice chancellors. Okay, so this is not the first time that it is happening. Previously, Maharashtra Assembly and even West Bengal government has resorted to such such an action. Okay, so apart from that, these state assemblies and these state governments have been accusing governors of acting at the behest of the center on several subjects. But what is the constitutional provision with respect to it? Okay, so actually education comes under the concurrent list, and both the state and the central government can make an act can make laws on it, but the higher education is part of the union list, and that's why the governor's interference is justified in that context. Okay, that's why central has substantial authority over higher education, and that's why the governors are acting on their own discretion while appointing these vice chancellors. Okay, so the next topic is patents in India. So according to Indian Patents Report, which has been released by National NASCOM, basically, the technology innovation in India is gaining pace because we have about 138,000 tech patents in India between 2015 to 2021. So what is a patent? So it's a powerful intellectual property right, and it gives exclusive monopoly to the patent holder for a pre-specified time. Okay, it is not that you get in monopoly for a unlimited amount of time. Let's say it is about for 10 years or 15 years, or in some cases it can be extended also, but it gives enforceable legal right to the patent holder to prevent others from copying that invention. Okay, so there are two types of patents, of course. One is the product patent and the another is the process patent. So in case of product patent, you have the right to the final product. Okay, so nobody, even if they use another process to make that product, they cannot do so because you are enjoying monopoly over that product. Okay, but there is also a process patent. So in that case, you cannot follow that particular process
to make that product, you can follow another process to make that product. Okay, so India was following this process patent earlier during the 1970 Patents Act, but later on we had to move to product patent because the WTO TRIPS agreement said so. Okay, so about the Patents Act of 1970, it was made on the recommendations of a younger committee, of course, and we had accommodated the Paris Convention and Budapest Treaty subsequently. So Paris Convention is basically talking about protection of industrial property, and Budapest Treaty is talking about the microorganisms or the biological things. So this act was also amended in 2005 when we moved into product patent regime, and we also introduced the compulsory licensing provisions. Okay, so after the WTO TRIPS agreement, we had to do it because we were part of the WTO. So recently also we have made some amendments in this patent rules. So Department for Promotion of Industry and Internal Trade has notified these amendments. So now educational institutions have been defined specifically because we want these educational institutions to file more and more patents, and that's why we are giving them 80% rebate on patent filing fees also. Okay, so also we have extended this expedited examination system, which means that it is the system where fastest patent is granted, generally in 41 days. So we have extended that system from just one category to now 8 more categories of patent applicants. Okay, these are the new rules that have been notified just last year. So the next topic is self-amplifying mRNA vaccine. A self-amplifying mRNA vaccine based in San Diego, California, that is in US, has shown promising results against COVID-19. So the vaccine candidate's name is ARCT-154. Okay, so how is it different from the normal mRNA vaccine? So you know that Pfizer, Moderna, they have this mRNA vaccines. So they basically encode the spike protein into the vaccine, or a spike protein of coronavirus, and they inject it into your body. So after that, the body develops antigens, and the body understand that if such kind of a spike protein is identified later on, we have to attack it. Okay, but what happens when this spike protein undergoes significant amount of mutation? In that case, the mRNA vaccines would fail, and that is what is happening in Pfizer's case or Moderna's case in the US and elsewhere. That's why you are seeing breakthrough infections, a lot of breakthrough infections. That's why the cases have also been rising despite them getting booster shots. That is what was happening to them. And of course, we did not get these mRNA vaccines thanks to the government policy. But these mRNA vaccines in the US and elsewhere have been criticized for this particular limitation. Okay, but now this limitation is being overcome by this self-amplifying mRNA vaccines. So what this self-amplifying mRNA vaccine is, apart from the spike protein, it adds 4 more proteins into the vaccine, so that the body, even if there is a significant mutation in spike protein, at least the body would start identifying the other 4 extra proteins, and they would develop antigens according to that. Okay, there is also another advantage of it because it requires a smaller dose as compared to mRNA vaccines. So this is a basic advantage of this self-amplifying mRNA vaccine. So the next topic is Defense Acquisition Procedure of 2020. So now certain amendments have been made in this procedure. So now we want all our modernization requirements to be indigenously sourced. We want to rely less and less on imports. In case there is a certain requirement of capital acquisition from foreign industry, that would be considered as an exception, and it would require an approval of Defense Acquisition Committee or the Raksha Mantri. Okay, so apart from that, we have also made requirements. The requirement of integrity packed bank guarantee has been dispensed with, and now earnest money deposit would be taken as a bid security for all acquisition cases. So you know that these companies who used to bid on our products, and they were given contracts, they had to deposit some money, but now it has been this provision has been changed into earnest money deposit. Okay,
And the procurement process under IDEX has also been simplified. So we already discussed about IDEX just I think 2 or 3 days back, and even the make to procedure of DAP 2020 has been simplified. So what is the difference between make one category and make two category? Basically, under make one category, the government provides you funding for the development of the prototype that you want to sell to the government. Okay, so 90% of around government funding is given to them. But under the make two category, the prototype development of equipment, system, or platform, or even their upgrades, do not get any government funding. So there has been significant simplification under this make two category now under the new amendments, and we have simplified the provisions, especially their testing. I think this is the thing. We have dispensed where we have simplified the single stage composite trials. We were earlier having certain stages of trials of these prototypes, but now we are going to have this just single stage trials, and we have also dispensed of with the requirements of quantity and scaling of these initial procurements. Okay, so what are the significant features or salient features of this defense acquisition procedure of 2020? Of course, we notify time and again, we notify list of weapons which we are going to stop importing from the world. So it basically gives the information to our private as well as public industry that the government intends to stop importing these weapon systems or these weapons. So now we have an opportunity to build them in our country and sell it to the government. Okay, so apart from that, we also have been focusing upon indigenization of the spare parts which we used to import earlier. Okay, so apart from that, these make one category, make two category, all these provisions have been introduced in this DAP. And we have also made some amendments to offsets. Okay, so offsets are the provisions in which you ask the foreign supplier that you should also procure some amount of products from us, so that we do not have a significant amount of foreign exchange loss. Okay, so like I was giving an example of Rafale earlier, that if you're procuring Rafale of 1000 crore rupees, you ask Rafale, the company Dassault, that you must be needing something else also. So why not you procure, let's say 30% or 40% of this 1000 crore rupees from us? You can procure anything. Earlier, there was a specific provision that they had to procure only defense products from India. But later on, it was changed that they can procure anything from us for that money. But now, there was another issue that in case there is just a single vendor. So let's assume that we want to procure a fighter jet and there is only just one supplier in the world. In that case, that supplier of course would not agree to offset provisions, because that company is enjoying monopoly. So in that case, what was happening is that the deals were postponed because they were not agreeing to it, to offset provisions, and we could not move forward because we had these strong offset provisions. So in that case, there could be the government could make an exception so that the defense forces and their acquisitions would not suffer. Okay, so the next topic is episodically accreting young stars. So Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences under the Department of Science and Technology have discovered this Gaia 20 EAA, that is it is the latest member of episodically accreting young stars. So what are these stars? So basically these are the young stars. They have low mass, and they have not yet reached that stage where their core goes into hydrogen fusion. So they are currently being fueled by gravitational contraction and deuterium fusion, and they are basically pre-main sequence stars, and because they're surrounded by disks of gas and dust. So these gas and dust are basically supplying them the matter. Okay, so this process of supplying matter through a circumstellar disk is called mass accretion. But there are certain times, or there are certain occasions, when this feeding rate from the disk increases, which is also called as enhanced mass accretion. So far we have identified 25 such rare groups of stars, and now
we have spotted this new member, and it is of course belonging to the extremely rare group of young stars which is exhibiting episodic accretion. Okay, so this is what episodically accreting young stars is. Okay, so the next topic is I create. So an MOU has been signed between the government of Gujarat and government of Gujarat's technology incubator, that is I create, and the CSIR, so that they can collaborate and support system for promising tech startups, so that they can so that combined resources can be made available to the entrepreneurs and innovators in the country who are working in the high tech industry. Okay, so basically these two, CSIR and I create, would share scientific innovation with these high tech companies or high tech startups, so that these scientific innovations can be made marketable. Okay, so what is I create? It is of course an autonomous center of excellence of government of Gujarat, and it is India's largest institution in this case, and it supports startups based on tech innovation. It is located in Ahmedabad, and it has almost supported 412 such innovations with 30 plus patents. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.